Friends, Namaskar dosto, hello members, thank you for joining my channel. This is a special video regarding Iran attack with SD. What I'm thinking about the recent Iran attack जो market में हुआ है, Iran and Israel as well, और उसका implication. कल रात को हम लोग जब इंडिया में सोने चले गए, there was after that Israel strike back at Iran largely towards उनका जो रेडर फैसिलिटी है, अभी तक जितना खबर मिल रहा है, रेडर फैसिलिटी they have attacked and allegedly it was an attack by Israel in response to the ये जो ईरान ने अटैक किया था थ्रू द मिसाइल्स which फाइनली ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया था, वहां पे इसका रेस्पॉन्स में इजराइल हैज फाइनली स्ट्राइक बैक. एंड प्रॉब्लम ये है, ये स्ट्राइक की वजह से हम लोग जो सोच रहे थे मे बी इजराइल ईरान के अटैक के बाद क्या हुआ, ईरान का अटैक टुवर्ड्स इजराइल वाज ग्रेटली डिफेंडेड, मेजर कोई डैमेज नहीं हुआ, जितना भी मिसाइल आया था दे वर इंटरसेप्टेड. नाउ इसके बाद सोचा गया था मे बी इजराइल सिंस देयर वाज नॉट सिग्निफिकेंट सुपर्ब डैमेज, so Israel may not strike back and so the ball of negotiation उनके कोर्ट में रहता है. But it is quite clear that Israel wants to strike back and ऐसा होने से problem is the Middle East war is hitting up and उसका heavy impact अपने market में होने वाला है. Let's discuss the market. Some of the trade, many of the trades I think I'm making, we are making profits. A few trades I'll not be making profits. In fact, I'll be incurring loss. So चलिए कुछ ट्रेड्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल करेंसी में इंपैक्ट देखिए. करेंसी में यूएसडी सीएचएफ स्विस फ्रांक इज अ सेफ हेवन करेंसी इज डाउन, मतलब यूएसडी सीएचएफ इज डाउन, मतलब स्विस फ्रांक इज अप. अगर हम लोग सीएचएफ यूएसडी देखेंगे, सीएचएफ यूएसडी एंड इफ यू लुक एट द 125 मिनट्स चार्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यूएसडी सीएचएफ इज बुलिश, so we can see a big drop from the momentum it is. If you bring the actual candle, you'll be able to observe it was such a big down move because Swiss franc usually acts as safe haven currency, so people run towards safe haven. Japanese yen also benefited. The dollar index is up, but largely due to the effect of euro, USD, US dollar, Dow Jones, FXCM dollar index is up, but that is largely I think the impact of the euro. Swiss franc and Japanese yen both are benefiting. तो इस मामले में डॉलर इज लिक्विडिटी. नाउ डॉलर को सिग्निफिकेंट सफरिंग तो नहीं दिख रहा है, बट सो हम लोग का जो मेरा जो बुलिश बेट्स है ऑन द डॉलर वो मैं रखूंगा. आई विल कंटिन्यू विद दैट बुलिश बेट. और उसके लिए मैं डॉलर का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इस्तेमाल कर रहा हूं, दैट आई हैव शोन यू इन प्रीवियस वीडियोस. इसके अलावा मेरा जो एक खराब इसके अलावा मेरा जो ट्रेड चल रहा है टुवर्ड्स बेस मेटल्स, आई डोंट थिंक बेस मेटल बहुत ज्यादा इंपैक्टेड होंगे रिगार्डिंग ये इजराइल का न्यूज. दे विल बी इंपैक्टेड बट नॉट सिग्निफिकेंटली बिकॉज उनका मिडिल ईस्ट के साथ नाता कम है. दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन सप्लाई डिमांड एज वेल एज चाइना का क्या सिनारियो. सो चाइना कम बैक may एक्चुअली बूस्ट द मेटल्स. जिसमें इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है दैट इज द गोल्ड. गोल्ड हैज क्रॉस्ड 2400 at one point. If you look at the gold chart, you can see big jump. If we look at the daily chart, it was a big jump in gold towards 2417. It's not able to sustain. ये spike से दिख रहा है, there are supplies around this 2400 level. सो गोल्ड में इमीडिएटली दो हमारा सिग्नल आ रहा है टुवर्ड्स अ बुलिश बेट्स ऑन गोल्ड. इफ यू लुक एट द 125 मिनट्स चार्ट, इसमें बिग जंप्स और बुलिश बेट्स ऑन गोल्ड की बात किया जा सकता है. बट नो, करंटली जो भी बुलिश बेट्स ऑन गोल्ड, आई प्रेफर टू गो फॉर ETF. करंटली विद दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आई एम नॉट थिंकिंग about derivative position. It will be very risky because the war happenings are not under my control. सिमिलरली सिल्वर भी काफी रिस्की हो चुका है. सिल्वर में वी आर सीइंग अ फेडिंग.
लग ही रहा था अब तो प्राइस बुकिंग का अपॉर्चुनिटी, या इट इज, इफ यू लुक एट इट इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी। आज जो सिल्वर ऊपर गया कुड नॉट सस्टेन। we'll have to very केयरफुली इसको ट्रीट करना होगा। वी कांट बी हरिंग कि अरे गोल्ड बाय कर लो, एक वॉर आ गया। वी शुड नॉट लिसन टू दिस रेटोरिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट क्या बोल रहा है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मार्केट क्लियरली इनिशियल स्टेज में एक सेफ्टी की तरफ भागा है। दैट्स व्हाई गोल्ड वाज अप, स्विस फ्रैंक वाज अप, जापानीज येन वाज अप, but now we are seeing that move is not able to sustain. So that is one. Crude oil, even if you look at crude oil in the morning was heading towards almost a 4% gain. So here I can see that gain has now significantly come down. If I go to the 125 minutes chart and bring the actual candle, you'll be able to visualize the spike. ये जो स्पाइक हुआ है in crude oil, so the first move is not able to sustain. Any kind of jumping to trade is a very bad idea in these phases जहां पे volatility increase हो चुका है और आपको जानते नहीं, if you with the among this increased volatility probably you are entering at the wrong place wrong time. तो इसमें मेरा लॉस लगने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पार्शियल एग्जिट कल ही आ गया था। If we look at the chart, this is the US oil spot. This was the exit that has appeared. फिर से एंट्री का मौका। Now if we look at the Indian chart में भी ये एग्जिट दिखेगा। But as I said last night, I exited partially. Obviously, I was not expecting that there will be an attack, but there was a signal, prior signal already from the afternoon. You can see that it's 5:20, then we have candle 7:25, then we have 9:30, and now final candle is today morning candle, which is obviously jump up because crude oil has went up. बट ये एग्जिट के साथ साथ जो 50% क्वांटिटी मैंने एग्जिट किया था, आज फर्स्ट 15 मिनट्स आई डू नॉट ट्रेड नो मैटर हाउ मच बिग लॉस आई एम मेकिंग. So after the first 15 minutes, I'll be squaring off any kind of short position that I have into crude oil. And US market is open. So once the US market will open, I'll consider squaring off SCO, which is short crude oil exchange traded fund. I have taken this more of a technical, it was a technical entry. अगर हम लोग SCO को देखेंगे, let's bring the crude oil. क्रूड ऑयल का चार्ट, दिस इज द, ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आई एम गोइंग फॉर द डेली और क्लियरली दिख रहा है हियर आई शुड गो फॉर ए प्रॉफिट बुक. प्रॉफिट तो नहीं इस केस में, बट मींस बुकिंग इन केस में लॉस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आई एंटर्ड, आई फिर इंक्रीज माय पोजीशन एंड सिंस देयर वाज नो मेजर न्यूज एक्सेप्ट कि यहाँ पे करेक्शन हो रहा था, बट दैट इज ऑन द डेरिवेटिव 125 मिनट में. बट डेली चार्ट के हिसाब से मैं जो SCO पे इन्वेस्ट किया हूं, सो आई एम गोइंग टू इनकार अ लॉस इन एटलीस्ट टू द ट्यून ऑफ 5 to 6%. So 5 to 6% loss I'll be booking into this one and moving out of crude oil. And gold, silver, very likely gold, not silver. Gold enjoys geopolitical premium. ये जो रिस्क है वॉर का, ये मुझे कंसिडर करना पड़ेगा. एंड आई हैव टू इंक्लूड द जियो मींस increase the gold ETF. Very likely I'll be purchasing the gold ETF more, but I'll wait for now. Next जो trade हम लोग किए हैं, that is बाकी trade अच्छा जा रहा है. Nifty, crude oil is the only troublesome. Nifty भी I think will go open gap big नीचे खुलेगा, which is good for our, because we are bearish on Nifty and Nifty 500. ये मैं warn किया था कि from the setup that yes it is bearish, not a great time. Looks like Nifty will open big gap down. We are short currently in S&P 500. S&P 500 में हम लोग short बैठे हुए. डाउ में एक एग्जिट का मौका मिला था कल, जो फाइनली नहीं लग रहा है it's turning to the opposite direction, but वो एग्जिट के साथ I have reduced my 50% quantity. Now with this war news and increased volatility, I'll be not increasing the position despite big sell-off आ रहा है. I'll wait and watch. Let's see how it goes.
दिस इज ये टेक्निकली इंक्रीज करना चाहिए एज पर माय सेटअप, बट दिस इज ये जो मूव हुआ है दिस इज अ न्यूज बेस्ड मूव. So I want to have more evidence. दिन को थोड़ा और जाने दीजिए. Today is the Friday. There will be 2-day holiday. Anything can happen Middle East over the weekend. So I don't want to overstretch the position. इसके अलावा I'm short in S&P 500. That short is going very, very well. I'm short in Nasdaq. Nasdaq में भी 30% to the tune मैंने position book किया था because it reached a very important level. ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था. सो आई पार्शियली 30% बुक किया था. सो नेचुरल नैस्डैक मुझे टेक्निकल के हिसाब से मेरे सेटअप के हिसाब से और एंट्री करना चाहिए, बट आई टेक इट इजी बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल न्यूज. सो इक्विटी ट्रेड जो है हमारे वो बहुत ही बढ़िया जा रहा है बिकॉज वी आर इन द शॉर्ट साइड. और एक चीज करंटली उतना अच्छा नहीं जा रहा है, बट आई थिंक इट इज फाइन. अब दिस इज US 30-year bond. Despite a rise in this crude oil price, this bond interest rate is going down. I have betted long with the interest rate and short with the bond, so this is bad news for me. This is largely happening because towards a flight towards safety. एक सेफ्टी की तरफ फ्लाइट जा रहा है, भाग रहा है पैसा सेफ्टी की तरफ बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन, एंड दैट्स व्हाई द 30-year इंटरेस्ट रेट इज गोइंग डाउन. So this is more of a war move towards safety move than what I have betted on, that the inflation is persist, because if inflation heats up because of the war, that will contribute to the inflation and interest rate. I expect the interest rate to further go up. It is showing some signs that it can go up further. So far, the trade is for me in profit because I've entered back in last Friday. But if it continues, it will not be obviously that much in profitable. So here मेरा exit को define कर लेते हैं. First of all, I'm managing the risk in the weekly. So weekly chart में if I see a red caps, obviously I'll reduce quantity. But in addition to that, since ये Middle East का happening हुआ, I'm now putting, if I see a background yellow here in daily chart, I'll also be exiting the short treasury positions. So that's all, friends, from my side. Overall, be careful. This is the key list Nifty 500 chart. If you in Nifty 500 chart में already आप लोग देखे थे sell signal था. अगर आप market को follow किए हैं, you are in a better position overall. So mera position I think broadly has done well. What I have not done well is the last round of crude oil short. Initially crude oil short बहुत ही बढ़िया गया. I was able to book profit derivative. Unfortunately ये जो exchange traded fund invest किया, so that one is going to basically incur the loss. Derivative में already partial profit book हो चुका था at almost at the lowest point, and now obviously हम लोग को exit करना पड़ रहा है काफी highest point. So it's देखा जाए तो 50% at 50% we are broadly close to the break even. But this FCO we did not book any profit, and as per daily आज exit करना पड़ेगा. At least 50% of the quantity exit करना पड़ेगा. I prefer to exit the full and wait and outside and see how it goes. So that's all, friends. Thank you for watching this video. I hope this video is helpful to you. अगर help हुआ, don't forget to like and subscribe. All the best to you from my side, and as always, once again, happy trading.